गुड ਈਵਨਿੰਗ एवरीवन। सो ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ +2 ਦਾ CBSE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ MCQs ਹੈ ਐਂਡ MCQs ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਹੈ 55 1 and 3। ਸੋ ਇਹ ਮੇ ਬੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1। Section A, a thin plastic rod is bent into a circular ring of radius r. So we have a circular ring of radius r. It is uniformly charged with density lambda. In the charge density lambda uniform, the magnitude of the electric field at its center is, so the answer is 0. Why? क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ for example a small charge element है, so ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ field ਹੋਊਗੀ that will be like this at the center, बट ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਫੀਲਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ 0 ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ। 3 ਚਾਰਜਡ ਸਫੀਅਰਸ x y and z हैव +q -q and +q। ਸੋ x ਦੇ ਉੱਪਰ +q, y ਦੇ ਉੱਪਰ -q, z ਦੇ ਉੱਪਰ +q। ठीक है जी। सो इस तरह चार्जेस पे हुए हैं। इनिशियली एक्स इज़ ऑल्सो हैल्ड इन प्लेस बट अदरवाइज फ्री टू मूव। एक्स है जो फ्री टू मूव है। जो एक्स ਨੂੰ रिलीज़ किया जाता है तो वह ਕਿਹੜਾ पाथ है एक्वायर करेगा। सो इक्विडिस्टेंट है, वैसे भी लिखा है इन्होंने इक्विडिस्टेंट है। सो एक्स के उपर जी फोर्स वाई करके लगेगी वो टूवर्ड्स दी वाई लगेगी क्योंकि नैगेटिव चार्ज इन्हू अट्रैक्ट करेगा। सो ये हो जाएगा FY। बट +q करके जी फोर्स एक्स के उपर लगेगी वो लगेगी अवे, बिकॉज पॉजिटिव तो पॉजिटिव रिपेल कर देंगे। ठीक है, सो ये आ जाना FZ। बट FY तो FZ के जोड़े मैगनीट्यूड्स है वो इक्वल है। सो इक्वल मैगनीट्यूड होने करके जोड़ा नैट इनका रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ दिस A। ठीक है, वो आएगा रिजल्टेंट A। सो आंसर जोड़ा आना चाहिए दैट इज़ A। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इन अ यूनिफॉर्म स्ट्रेट वायर conduction electrons move along positive x direction. Let E and J be the electric field and current density in the wire respectively then। so अपन पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अवे फ्रॉम द फील्ड मूव करते हैं, मतलब फील्ड तो दूर भजते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द फील्ड है। फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट जाते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉन +x वाले पासे जा रहे हैं इनका मतलब E है जी इलैक्ट्रिक फील्ड है -x डायरेक्शन के है। सिमिलरली अगर आप ओम्स लॉ ऑफ इन वैक्टर फॉर्म देखिए तो J वैक्टर इज़ इक्वल टू सिग्मा E वैक्टर होंगे। सो E तो J की डायरेक्शन भी सेम होएगी। सो E तो J की डायरेक्शन है जी नैगेटिव x है जी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। 2 चार्ज पार्टिकल्स P and Q each having charge Q but of mass M1 and M2 are accelerated through the same potential difference V। They enter a region of magnetic field and describe the circular paths of radii A and B respectively। Then M1 by M2 is equal to, so अपने कोल जी रेडियस की वैल्यू होंगी है। सो रेडियस इज़ MV by QB है ना। सो अगर आप R1 by R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो इट विल बी M1 V1 ओवर M2 V2 बिकॉज QB दोनों लिए सेम है, कैंसल आउट हो जाएगा। उन्होंने सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलरेट किया है। सो इफ वी विल सी देन हाफ MV² शुड बी इक्वल टू QV। तो वेलोसिटी की जी या स्पीड की जी वैल्यू आ जाती है इतों वो आ जाती है अपने को 2QV पोटेंशियल ओवर M। सो V सॉरी इतने स्क्वायर रूट आएगा। सो V इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M। सो नैट जोड़ा अपने कोल डिपेंडेंसी आती है दैट इज़ रूट M1 डिवाइडेड बाय M2 बाय रूट M2। ठीक है, सो इतने अपने कोल आ जाएगा। सो हेयर वी विल गेट सो R1 by R2 is equal to
स्क्वेयर रूट ऑफ m1 बाय m2। अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो अपने को r1 का स्क्वायर ओवर r2 का स्क्वायर आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू a स्क्वायर बाय b स्क्वायर। सो आंसर है जोड़ा सी आना सीगा। Next is a galvanometer of resistance G is converted into ammeter of range 0 to I ampere. If the current through the galvanometer is 0.1% of I ampere, then the resistance of the ammeter is, आप ammeter की resistance find out करनी है। Let's see अपने को जोड़ा ammeter आप किमें बनाने हैं, अपने को शंट है, इस शंट ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.1% ਹੀ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ 0.1% ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਬਾਏ 1000 एम्पियर। So according to the equation of shunt, I is equal to Ig over I minus Ig। So Ig ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ I by 1000, I है, so ये होगा I by 1000, so I by 1000, so आएगा 999 I by 1000, cancel out, I ना I cancel out, ये बन गया 1 by 999। सॉरी इतने जी भी लगना सी अपने को गलवेनोमीटर की रेजिस्टेंस। सो इतने अपने को जी आ जाएगा जी बाय 999। सो ये शंट आ गया अपना। हुण शंट ते गलवेनोमीटर ये एक दूसरे के पैरल दे विच है, तो नैट जी रेजिस्टेंस है मीटर की बननी चाहिए है 1 बाय जी ओवर प्लस 999 बाय जी। सो इट विल बी 1000 बाय जी। सो आर शुड बी इक्वल टू जी बाय 1000 ओम। सो इनका जोड़ा आंसर है ये होना चाहिए अपने को जी बाय 1000। A 10 centimeter long wire lies along y-axis. It carries a current of 1 ampere in positive y direction. The magnetic field is this, and the force of the on the wire is, so force is equal to IL cross B. So value of I is 1, length is 1 by 10 meter, and the current element is in y direction, so it will be J cross B is this cross B। सो अगर इन नाल आपां इनू क्रॉस प्रोडक्ट करिए तो J क्रॉस J तो 0 बन जूगा, ठीक है। तो आंसर थोड़ा आएगा -0.8 मिली टेस्ला and J cross K, so J cross K is I, so answer is B। Next is 7th. The primary and the secondary coils of a transformer have 500 turns and 5000 turns respectively. The primary coil is connected to an AC source of 220 volt 50 hertz. The output across the secondary coil is, so the इनू सॉल्व करने लिए अपने को इक्वेशन होती है ट्रांसफार्मर रेशियो वाली, NS by NP is equal to VS by VP। so VS कितना आ जाएगा अपने को VP into NS by NP। सो इनू सॉल्व करने ते अपने को VP प्राइमरी जी वोल्टेज अपने को 200, सो NS इज 500, सॉरी 5000 एंड इट इज़ 500। सो आ कैंसल आउट हो गया अपने को, ये आ जाना चाहिए अपने को 1 2 3 10 आ जाएगा। सो अपने को 220 multiplied by 10, it will be this C। The first scientist who produced and observed electromagnetic waves of wavelength range from 25 mm to 5 mm। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸੋ C ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ JC ਬॉस। The waves associated
The waves associated with a moving electron and moving photon have the same wavelength lambda. It implies that they have lambda is equal to h by mv. So mv is equal to h by lambda. So jada momentum hai, that depends upon the Planck's constant and lambda wavelength. Since wavelength is same, then they have the same momentum. Two beams A and B whose photon energies are 3.3 electron volt and 11.3 electron volt respectively illuminate metallic surface. Work function 2.3. The ratio of maximum speed of electrons emitted due to beam A to that to beam B is, so अपने कोल काइनेटिक एनर्जी दी रेशियोज आ जाएंगी ना इथों. सो 10.3 ਤਾਂ A ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ ਬੀਮ ਦੀ, 2.3 ਯੂਜ਼ ਹੋਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇਜੈਕਟ ਕਰਨ ਚ, ਬਚੀ 1. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ 11.3 ਮਾਈਨਸ 2.3 ਇਹ ਬਚੇਗੀ 9. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਇਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 1/3. ਸੋ C ਇਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ. The transition of electron that gives rise to formation of second spectral line of Balmer series in the spectrum of hydrogen atom corresponds to second Balmer series. So first hundi hai apne kol n is equal to 2 to n is equal to n is equal to 3 to n is equal to 2. So second apne kol hundi hai n is equal to 4 to n is equal to 2. So n is equal to 4 initial 4 final 2. So answer aana chahiye toda. Germanium is doped with arsenic due to doping. Arsenic is a pentavalent impurity, so it will increase the number of conduction electrons. ਹੁਣ जी अपने को assertion reason. So the first is two long parallel wires freely suspended and connected in series to a battery move apart. So इन्हों देखते हैं ਆਪਾਂ किवें गल कर रहे हैं. अपने कोल दो parallel wires मान लो आह A वायर है तो B वायर है, दोनों पैरल वायर्स है, इन्हों सीरीज से कनैक्ट किया गया एक बैटरी नाल. तो इन्हें विचों करंट किवें फ्लो करेगा इस तरह है ना. सो करंट इन्हों दोनों दे विच ऑपोजिट है, अगर करंट ऑपोजिट होवे तो वो रिपेल कर रही है. सो असर्शन है जिहड़ा वो अपना ठीक है. Two long parallel wires freely suspended and connected in series to a battery move apart. They will move apart. Two wires carrying current in opposite direction repel each other. नहीं नहीं ये भी ठीक है. दो वायर्स होंगी जिहड़ियां कि ऑपोजिट डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ करंट कैरी करती है, एक रिपेल करती है. यस दे रिपेल ईच अदर. सो रीजन है जिहड़ा वो असर्शन ਨੂੰ एक्सप्लेन करता है. सो ਇਹਦਾ आंसर है जिहड़ा वो आता सी A. Plane and convex mirror cannot produce real images under any circumstances. That is false. Plane and convex mirror can form real images if the object is virtual. अगर object virtual होवे तो form कर सकती है. A virtual image cannot serve as an object to produce a real image. This is also false. A virtual image can be used as an object can be used as an object to form a real image. So इधर आंसर D आना सी. ठीक है. Assertion is false, the reason is also false. Next is the mutual inductance between the two coils is maximum when the coils are wound on each other. That is true. The flux linkage between the two coils is maximum when they are wound on each other. That is also true. So obviously in the answer आना सी A. In the photoelectric effect, kinetic energy of the emitted photoelectrons increases with the increase in the intensity of the incident light. That is wrong. Photoelectric effect ਦੇ ਵਿੱਚ kinetic energy ਹੈ ਜਿਹੜੀ emitted photoelectrons ਦੀ intensity ਨਾਲ ਨਹੀਂ increase ਹੁੰਦੀ. It increases with the frequency. ठीक है. frequency ਤੇ depend ਕਰਦੀ ਹੈ.
Photoelectric current depends on the wavelength of the incident light. That is wrong. Photoelectric current ਦਾ ਜਿਹੜਾ amount ਹੈ ਉਹ depend ਕਰਦਾ ਹੈ number of photons ਤੇ, number of photons ਤੇ. So number of photons means intensity. So intensity ਆਣਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੀ wrong ਹੈ, ਆ ਵੀ wrong ਹੈ. So the answer should be D. So ਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ.